बंधुगण मु समस्त को आनुष्ठानिक भाव स्वागत करुच्ची आज ये तृतीय जो आभासी कार्यक्रम वेबिनार कार्यक्रम को समस्त स्वागत करुच्ची जो कैरियर काउंसलिंग जो माने वर्तमान आमर प्लस थ्री जो माने पढ़ुचंती जो मानकर प्लस थ्री शिक्षा आउ 2-3 मास पर समाप्त हबो से माने प्लस थ्री शिक्षा शेष कला परे कौन कौन कार्यानुष्ठान सब नेबे निजर भविष्य पाई शिक्षा क्षेत्र रे हो नियुक्ति क्षेत्र रे हो कौन कौन सुविधा रही याकू व्यापक करबा पई पिलांक पाखरे पर्याप्त सुजोग कौन रही पहुंचा ये कार्यक्रम उद्देश्य तेणु मु स्वागत करी आम सहित आमर निमंत्रण रक्षा करी आम सहित जो माने देउचंती जो माने वक्ता भाव रे रिसोर्स पर्सन भाव रे आम सहित जोग देउचंती ताको मु स्वागत करूची प्रथमे मु स्वागत करी डॉक्टर ज्योति शंकर प्रधान जे अछंती आमर एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर कैरियर काउंसिल फकीरमोहन विश्वविद्यालय बालेश्वर रो जे अछंती डॉक्टर ज्योति शंकर प्रधान तांको मु स्वागत करूची आमर सम्मानित वक्ता भाव रे कार्यक्रम जे सम्मति प्रदान करछे हम से तो रहछे विशेष करी आमे जतवे जो जातीय शिक्षा नीति जो कथा कहउची न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी रे ए जो कैरियर काउंसलिंग की नै कि जो व्यापक व्यवस्था करा है छी जने छात्र किबा छात्री से शिक्षा सहित अन्य जो डुअल डिग्री कथा मध्य आज वर्तमान क्षेत्र गुरुत्व दिया होची वर्तमान जो माने प्लस 3 पढुचंती फाइनल ईयर रे से प्लस 3 शिक्षा शेष करे से माने कौन करवा दरकार ताकर निज जो पेरेंट सब्जेक्ट रे सेतिरे जहार इच्छा अछि जे पीजी करिवो किंबा जो प्रोफेशनल कोर्स रही सेतिरे से माने जो कौन रे कले कौन सुविधा हेई परिवो से संपर्क रे मध्य हमर जो सम्मानित अतिथि अछंती डॉक्टर ज्योति शंकर प्रधान से जने शिक्षाविद हिसाब रे एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब रे तांकर जति सुख्याति अछि विशेष करी कैरियर काउंसलिंग सेल रे जेहेतु फकीरमोहन विश्वविद्यालय अछंती बालेश्वर रे से आज तांकर जत वक्तव्य देबे से संपर्क रे मध्य से अधिक भाव आलोचना करिवे हम सहित अछंती श्री रूप कुमार प्रधान कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट रूप कुमार प्रधान से भी अछंती मु तांको मध्य स्वागत करछि श्रीयुक्त प्रधान रेवेन्सा महाविद्यालय रो विश्वविद्यालय हाफ टिकेट धरी कि सी ओडिशा रे ए जो कैरियर काउंसलिंग करके फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट हिसाब रे फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो कोन हबा दरकार से दिगरे जने राज्य जने सुविदित से जने सुख्याति थिबा जने विशारद से आज आम सहित जोग दउचंती ये कार्यक्रम रे विशेष करी ए जो माने प्लस 3 पढुचंती प्लस 3 शिक्षा समाप्त परे कोन हबा दरकार तांकर कैरियर दिगरे कोन कोन कार्यानुष्ठान लेले भलो हबो से विषय से आज आलोकपात करिवे आ आम सहित अछंते श्री अरविंद दास से जने सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर एवं विशेष करी कि कैरियर काउंसलिंग रे विशेष करी स्टूडेंट माने जो माने अछंती जो माने उच्चतर शिक्षा करबा पई चाहउते कोन कोन दिगा रखा जाई छि कैरियर क्षेत्र रे से विषय करबे श्री अरविंद दास आमर जो कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड जो सब हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रेनिंग प्रोग्राम रे जने सर्टिफाइड ट्रेनर हिसाब रे भारत वर्ष रे ताकर ना रही छि विशेष करी ओडिसा रे विभिन्न नियुक्ति क्षेत्र रे हो बा कंपनी मानकर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो ता सेतिरे श्री अरविंद दास अति सुचारू भाव रे से ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करछथि आमे आज खुशी से दी जण को आमे पाइतो आमे कोन रे एवं विशेष करी डॉक्टर ज्योति प्रधान को मध्य पाइतो ये तीन जण निमंत्रित अतिथि मान को मु स्वागत करछि एवं मु स्वागत करबी आनुष्ठानिक भाव रे से अधिकारी माने जो माने हम से भी अछंती विशेष करी हमर यूजीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग एवं एआईएसएचजी रो जो प्रतिनिधि माने हम से तो जोग दैछथि ये कार्यक्रम को ओडिसा रे विभिन्न विश्वविद्यालय पढ़ुवा प्लस 3 शेष वर्षर पिला पाखे केमती आमे अधिक भाव रे याको पहुंचै परिबा से माने हम सहित असन ताको मध्ये स्वागत करछि एवं विशेष करी ए कार्य को
गत 1 मास धरी जो माने अति ताकू प्रचार प्रसार करबा एवं ताकू सफलता दिगरे पहुंचे पे जो माने अहर आम सहित काम कर सफल करने श्रीयुक्त मनोरंजन पंडा, सुचेता महांती एवं डॉक्टर गायत्री पट्टनायक, रघुनाथ मंडल एवं ये विजय लक्ष्मी बेउरा, पवित्र नायक ये जो माने आम सहित बैकएंड ऑफिस रही कार्यक्रम को करुँच एवं प्रत्यह विभिन्न महाविद्यालय प्रिंसिपाल, भाइस प्रिंसिपाल एवं विभिन्न विभाग विभागीय मुख्य मान सहित जोगाजोग करी पिला माने केमती रजिस्ट्रेशन करि परिबे एवं केमती ये कार्यक्रम जोग दे परिबे ताकू विस्तृत भाव में जो प्रकार सूचना दौरान जो मैंने कार्यक्रम सफल करने आनुष्ठानिक भाव में स्वागत करुँच विशेष करी जो मैंने स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स से छात्र छात्री मान विशेष भाव में स्वागत कर आशा करी ये कार्यक्रम जहाँ +3 शिक्षा समाप्त करे ये कार्यक्रम जहाँ आलोचना हम ताहा से दिशा बा दिग देखब तेणु से अनुरोध करी यही आलोचना बेले समस्ते शांति सहित समस्ते निजको म्यूट रखिए, ऑडियो समस्ते म्यूट रखिए, डिस्कशन बेले कौन सी प्रश्न पचारे नहीं, जहाँ प्रश्न आसूची जे वक्ता जो कहते विषय जो प्रश्न आसूची निर्धारित भाव में गोटे कागज आप लिखु 1 2 3 से प्रश्न लिखु किंबा आपण से प्रश्न को चाट बॉक्स जो आमर अच्छी चाट बॉक्स रे आपण पचारि पारंती किंतु आलोचना होउतला भितरे कौन सी प्रकार प्रश्न आपण दया करके पचारिबे नहीं, आमे सब प्रश्न रो उत्तर दबु जेतेबेले आमर वक्ता माने कहि सारिबे जेतेबेले ओपन हबो इंटरैक्टिव सेशन आरंभ हबो सेतेबेले आपण सब प्रश्न रो उत्तर आमर जो माने निमंत्रित जो माने अछंती अतिथि वक्ता आम सहित अछंती से माने देबे। तेणु मु आशा करी ये कार्यक्रम टी आमर स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स बंधु माने ए दिग प्रति टिके ध्यान देबे एवं आमर जो माने निमंत्रित अतिथि अछंती आम सहित प्रथमे से माने वक्तव्य रखिबे एवं वक्तव्य शेष परे जो छात्र छात्री जहाँ प्रश्न आसीबो सेटा आमे इंटरैक्टिव सेशन रे से विषय आमे आलोचना करिबा एवं से तार से माने तार प्रश्न उत्तर देबे। तेणु आशा करी पुणी थे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स बंधु मान करी वर्तमान समस्ते दया करके आपनकर ऑडियो को म्यूट रखंतु, दया करके ऑडियो को म्यूट करंतु जेतेबेले कुहा जीवो इंटरैक्टिव सेशन आरंभ हबो सेतेबेले आपण अनम्यूट करिवे, अनम्यूट करके पुणी कहबे। वर्तमान समस्त को रिक्वेस्ट करछु काइंडली म्यूट योर ऑडियो and kindly don't put any questions during the discussion. I hope these are minimum expectation from our student participants, and with this one, again I welcome all of our participants along with our invited guests to this third webinar organized by Institute of Media Studies as a part of career counseling for the +3 final year students. Now I am over to our anchor to coordinate the program. Thank you. Thank you, sir. So now it's time that our resource persons will address you all. जमती सार प्रथम कहले कि पिला माने जो माने पार्टिसिपेट करिछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट माने म्यूट करंतु आपनकर ऑडियो वीडियो सब म्यूट करंतु एवं जहाँ हमर रिसोर्स पर्सन माने कहिबे एक्सपर्ट माने कहिबे ताको टिके मन दे कि सुनंतु ता द्वारा कोन हो ना आपन प्रश्न गुडी को भल भाव में आपन जानि परिबे कोन प्रश्न पचारिबे गोटे निर्दिष्ट फॉर्मेट रे आपन प्रश्न टी प्रस्तुत कर रखिथिबे एवं ताकर जेतबे हमर सेशन 3 जण पर सरी जिवो सेतबे आपन प्रश्न चैट बॉक्स रे लिखि पारिबे बा जदि चाहिबे आपने हैंड रेज करबे आमे आपन को पचारि तेणु मु वर्तमान हमर प्रथम वक्ता जी अछंती डॉक्टर ज्योति शंकर प्रधान सार को अनुरोध करूची सार तकर वक्तव्य रखंतु एवं जेमति आमे कहलु जे 15 मिनिट पर्यंत आपन को वक्तव्य 15 मिनिट भितर सुनि करथि। धन्यवाद सर। बहुत ज्योति शंकर सर। Thanks to Dr. Gayatri Patnaik, moderator of the session. First, I would like to address the esteemed Director, Institute of Media Study, Professor Upendra Padhi,
and Manoranjan Padi, faculty member of Institute of Media Studies, and my respected fellow speaker, Mr. Rupa Kumar Pradhan, Mr. Arvind Das, and my dear students and other dignitaries who have connected through this online platform. Basically, it is difficult for me the topic in 15 minutes. I would like to request the organizer give me more 10 minutes. And today my discussion is teaching as a career. I will present a pictures about the teaching as a career to our final year students. Generally, students often get worried about their career and future jobs and everything. Students start searching for jobs after the complete determined to get a good job. Generally in India, there are various graduate jobs available for our students. If you are a student or someone searching for the graduate jobs, various careers are available. Like different category of jobs rules, you need to choose according to your field of interest and passion. And you can work in a private company or work as a government employee, or you can make your own business, and you can choose your career according to your own interest. There are various opportunities available for the graduate students in our state as well as in India, like the human resource, accountancy, marketing and advertising, investment banking, management consultancy, public relations, hospitality and travel management, and teaching also. Teaching also is now a real profession, in my opinion. As a academicians, definitely I will support the teaching as a good profession. And the first thing that you must know about the teaching as a profession, teaching as a career, is that teaching is about the inspiring and motivating the students to realize and exceed their potential. And the greatest teachers of all time have devoted their lives to the inspiring and empowering their students to achieve great things and be a good human beings. Perhaps if Shiv Subramania Layar, a teacher of Dr. APJ Abdul Kalam, had not shown him how birds fly and inspired him to pursue a career in the fight, India might not have got one of its greatest space scientists and engineer of all times. And India might not have got one of the greatest presidents of all times. So you see, not only the teaching as a career, but also as a passion, take you a greater heights. And remember those classes where your teachers would share stories with you and explain the complex topics through the fun activities and share their experiences and love for their subjects. And they are not only ordinary teachers, but also your mentors. And they are the ones who inspire the students, not just by the teaching as a subject, but by sharing a bond, exchanging thoughts and building upon them. And if this is what you want to reflect in your teaching career as well, then a teaching career could just be the perfect career for you, a perfect profession for you. And several studies show that subject matter knowledge, teaching skills, and personality are the key factors that influence the students' learning patterns. A career in teaching can be rewarding. It not only offers you a chance to impact young mind, but also makes you immensely satisfied with the work you do. Okay, and teaching allows you to set the future of the young generations, and those you contribute toward the building a culture society. And to build a career in teaching, you need to understand the educational requirement as well. There is no greater requirements to excel in teaching other than passion. But you need the right qualification to pursue a career in teaching, and there are many ways to pursue teaching as a career or teaching as a profession. And if you are thinking about a teaching career, before selecting the type of degree you intend to pursue, you should consider the type of education job you envision for yourself. There are many different types of teaching jobs available nowadays, that is from pre-primary teacher to university teachers. And in my deliberations, I will share my thoughts about all these things, that is how you select your career
Thank you, Professor Pai sir. Though you all are doing bachelor degree, you all are final year students, and you all are interested for a white collar job, definitely there are so many expectations of your parents from you, and every parents wants their child to be a good person, get more salary, and you may not be interested for the pre-primary teacher, but due to the scarcity of the job, you should know about the criteria. You should know about the qualification required to become a pre-primary teacher. If you want to pursue Uh, we are extremely sorry. Perhaps Dr. Jyoti Shankar Pradhan, in his point, there is some bandwidth issue. Dr. Pradhan will join us later on. Now, we request Sri Rupkumar Pradhan, our another expert, to speak on the issue. Now, I request Dr. Rupkumar Pradhan to speak on the issue. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Respected Upendra Padi sir, Gayatri madam, and Raghunath Mandal sir, and Dr. Jyoti Shankar Pradhan sir, and my fellow speaker Arvind Das. Actually, it's a very auspicious session for us, all the plus 3 students, those who want to start their career after 1 year or this year. But the most important thing here is why should we start a career? First thing is this is related to our income, our career, our 30, 40 years career to do a job or profession, whatever it may be. But why to take a decision today? Because if our decision today is wrong, then that will automatically impact on your career for another 30, 40 years. If you are taking a right decision now, which whatever the course, it might be MBA, it might be journalism, it might be your photography, it might be your video editing, whatever it may be. If you are taking a right decision, then it will help you in long run. Means entire another 30, 40 years earning career, it will help you to earn money, to establish yourself in the society. You can establish in your particular profession. But thing is here, which career you want to choose, that is the most important factor. And when we are talking about any course, whatever it may be, first we are thinking to take a qualification, might be MBA, might be journalism, might be MFC or income, whatever it may be. When you are taking a qualification, right now the job market is looking for the domain knowledge. Whatever the domain knowledge, suppose you want to become an expert in video editing, whether you have a domain knowledge in video editing or not, you might have a qualification in suppose a diploma in video editing, but you don't have the expertise on that video editing, that will not qualification. When we are thinking why we should decide for a qualification, first thing is that whenever we are taking a decision for a qualification or a job or a career profession, that is related to your 30, 35 years income earning period. For that reason, today as a graduate or as a plus 3 final year student, you have to take a decision today, what type of a course should I take today so that it will help me for another 30, 40 years. For that reason, you might be thinking to go for a particular course. Might be MBA, might be journalism, might be MFC, whatever it may be. But the qualification is one part to enter into the job market. But with the qualification, you have to have the domain knowledge of that particular qualification. Suppose you are thinking diploma in video editing or diploma in digital marketing, and you have completed the qualification, but you don't have the domain knowledge of video editing, then you will face a lot of competition in the market, job market. That's why whatever the course you are choosing, as per your requirement, as per your aspiration, as per your dream, you choose it, but do that course in so seriously with all the practical experience from the market and with the domain knowledge. You have to also develop your communication skill, personality development, presentation skill, all these things you have to develop. But the thing is that
we have to take a decision what type of a course we should go. That is the most $1,000,000 question for yourself. All the experts are here. Jyoti Shankar Pradhan sir is here, Arvind Das is here, me and Padhi sir is here. All the experts are here. They will integrate in detail, will tell you what course is so important in your career. So you will get all the inputs for yourself to take a final decision which course I should go after completion of my graduation. But if you are not taking this decision today, then it will be very difficult to later on after 2-3 years, if you want to take a decision, that will be very difficult for you. And I am very much thankful to Padhi sir that he has arranging such type of session for our Odisha students to get an IQ about how to choose a career, so that it will help you to take a decision. Definitely, we'll talk much things on this, but due to the time constraint, I'm keeping it my introduction speech here. Other speakers are there; they will discuss. If any questions are there, we'll also give you the answer, and with the right answer, you will get it. Thank you so much, sir. Sir, thank you very much for your this short deliberation, but this deliberation inspired our students to be sincere in their selection of the professional course, and also if they are 100% effort so that they can be employable in the market, they can fulfill their dreams and aspirations. So thank you very much. Now it's about to Arvind sir, Arvind Das, certified counselor, for his deliberation. Sir, please. Arvind sir, you are muted. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, you can tell him, ma'am. Am I audible? Yes, sir, Yes, you are audible. yes. Thank you, thank you. Thank you so much, Gayatri madam. Thank you, Upendra sir, for inviting me, and thank you all the other faculty members. And also a big hi to all my fellow speakers, Mr. Roop Kumar Pradhan and Jyoti Prakash Pradhan sir. So, namaskar, bhai और भौणी माने. मु इंग्लिश हिंदी ओडिया तीनटा लैंग्वेज रे कंफर्टेबल, किंतु मु आज ओडिया रे कथा होबो चाहूची, कारण मु भाबुची कि मैक्सिमम पिला माने ओडिया रे चाहूचोदी, तो मु ओडिया रे कम्युनिकेट करिया को चेष्टा करिवि. Thank you, sir. Thank you. Thank you. तो मु बहुत खुशी अछि एवं बहुत गर्वित फील करछि, कारण मु मोर ओडिया भाई और भौणी मानक एड्रेस करिया जाउछि. मु सर्टिफाइड करियर काउंसलर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और मोटिवेशन स्पीकर बाय प्रोफेशन. बट आपण मन पे मु भाई आ बड़ भाई हिसाब रे मु आपण को डायरेक्शन देबी. मते बहुत कम टाइम मिलिछि अन्य स्पीकर्स मानक भलिया 15 to 20 मिनिट्स, किंतु मु एया चेष्टा करिवि कि ए 15 to 20 मिनिट्स रे आपण को बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन देबी. तो सेथि पे मु समस्त को रिक्वेस्ट करूची कि आपण माने समस्त मते मन ध्यान देकी सुनंतु, एंड आशा करूची कि आपण माने मते सुनिबे. तो प्रथम मते एया कुहा जायछि कि आपण माने सब +3 स्टूडेंट्स, किए साइंस बैकग्राउंड रु, किए कॉमर्स बैकग्राउंड रु, किए आर्ट्स बैकग्राउंड रु. तो आपण जदि चाहउचंदी आपण जो लाइन रे अछंदी सेही लाइन रे जदि कंटिन्यू करिया चाहउचंदी सेही लाइन रे आपण कंटिन्यू करि परिबे. बीएससी परे आपण जदि जॉब चाहउचंदी सेही लाइन रे सेटा करि परिबे. जदि आपण हायर स्टडीज चाहउचंदी एमएससी करि परिबे. आ जदि आपण रिसर्च की लेक्चरशिप लाइन रे इंटरेस्ट अछि त आपण पीएचडी करि परिबे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जदि हमें कथा बा कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स माना विषय तो कॉमर्स वाला भी सेम जिंस कर परिबे, जॉब करि परिबे, एमकॉम करि परिबे, आ पीएचडी भी करि परिबे. किछटा प्रोफेशनल कोर्सेज भी अछि कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स मानक पई, जेमति कि सीएस कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्टिंग आ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो ए सब प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपण प्रिपेयर करि परिबे. देखंतु मु भल भाव जानी कि आपण मान को ऑलरेडी बहुत सारा जिंस जणा थिबो, आउ एटा भी मु जानी कि किछटा इन्फॉर्मेशन आपण पे नुआ रहइबो. हेता कि सेटा 50% नुआ हेथाय पारे,
15% कि 5%, किंतु गोटे कथा मन रखु जदि भी सेटा 5% नुआ आपण मन पे आपण को करियर रे गोटे टर्निंग पॉइंट आनी पारे। तो सेथि पे मन ध्यान देखि आपण माने सुनंतु। तो मु कॉमर्स विषय रे कथा होतले, अबे आर्ट्स विषय रे जदि कहबे आर्ट्स जदि आपण कंटिन्यू करिया चाहउछंदी तो आर्ट्स रे भी सेमिति आपण करि परिबे, आर्ट्स रिलेटेड लाइन रे जॉब करि परिबे, पोस्ट ग्रेजुएशन करि परिबे आ पीएचडी मध्ये आपण करि परिबे। एबे मु आपण को पांचटा कॉमन करियर ऑप्शंस कहबी। आपण कोनोसी बैकग्राउंड रो भी हेई थांतु, कॉमर्स रु, साइंस रु कि आर्ट्स रु, आपण ए कॉमन करियर ऑप्शन आपण चूज करि परिबे। तो प्रथम मु कथा हेबी एमबीए विषय रे, कारण मु निजे गोटे एमबीए ग्रेजुएट। तो एमबीए विषय मु कथा हो चाहूची। एमबीए गोटे बहुत ही डिमांडिंग करियर ऑप्शन। एमबीए गोटे नुआ करियर रे बहुत आगुरु अछि, आ एबे भी तार डिमांड अछि, आगु को भी बहुत डिमांड तार रहिबो। आज आपण जो भी सेक्टर को जिबे तो सेही सबु सेक्टर रे मैक्सिमम देखा जाउछि कि एक्सपर्ट्स माने, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स माने से माने मिनिमम क्वालिफिकेशन देखुछनी एमबीए। तो एमबीए टा गोटे भलो करियर ऑप्शन आपण मान पे रहिबो। गोटे कॉमन लाइन किछटा मु कहि दउछि, आपण मान नोट डाउन करि परिबे जदि आपण चाहेबे। फाइनेंस हैला, एचआर हैला, मार्केटिंग हैला, एटा किछटा कॉमन लाइन्स अछि। आकु छाडी के भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशंस अछि, जेंति कि ऑपरेशन हैला, रूरल मैनेजमेंट हैला। आउ गोटे इंटरेस्टिंग कथा आपण मानकु मु कहिया चाहूछि, किछटा नुआ अनकन्वेंशनल लाइन्स भी आज का डेट रे आसी गळनी एमबीए रिलेटेड, जेंति कि एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट अछि। जदि आपण माने स्कूल टाइम रे कि कॉलेज टाइम रे कि बहुत सारा मैनेज करिसंती, इवेंट बहुत सारा ऑर्गेनाइज कर, आपण एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट करि पारि। आ गोटे इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन अछि कोहंती एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जदि आपण स्पोर्ट्स प्रति बहुत इंटरेस्ट अछि, संगे काम करियो चाहउचंती, तो एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी करि परिबे। हॉस्पिटल रे काम करियो चाहउचंती, एमबीए इन करि परिबे। एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कर परिबे। तीर बहुत सारा स्पेशलाइजेशन आसी गलानी। एमती नै कि एमबीए खाली 3टा 4टा स्पेशलाइजेशन अछि, बहुत सारा कन्वेंशनल आ बहुत सारा अनकन्वेंशनल लाइंस आसी गलानी। हां, बेनिफिट अनकन्वेंशनल स्पेशलाइजेशन लेले एया बेनिफिट कि कंपटीशन टा कम हे जिवो, आपण जॉब प्रोवाइड टा बढ़ी जिवो। तो एटा ला एमबीए, और एमबीए पे बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम अछि, जेंति कि कैट, जैट, स्पेसिफिक कॉलेज रिलेटेड भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम अछि, एनमैट अछि, आउ स्नैप अछि। ओडिसा रे भी बहुत सारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अछि, जेंति कि ओडिसा जेई अछि, आत्मा अछि, एक्सेट्रा। तो एबे एमबीए जानला परे मु सेकंड करियर ऑप्शन विषय कथा हेबी, जोटा कि आपण माने ऑलरेडी जानि थिबे, ऑलरेडी बोधे से लाइन को जिबा पे प्रिपरेशन करथिबे। सेटा हला कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपण प्रिपेयर कर परिबे आपण ग्रेजुएशन परे, कोनोसी बैकग्राउंड रे भी आपण माने हेई थांतु, कॉमर्स, साइंस की आर्ट्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत सारा जिंस अछि। ओएस प्रिपरेशन कर परिबे, आईएएस प्रिपरेशन कर परिबे, बैंकिंग लाइन जाई परिबे, बैंकिंग सबोले डिमांडिंग रहउची, रेलवेज रे जाई परिबे। ए सब बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब पे आपण प्रिपरेशन करि परिबे। किंतु गोटे इंपोर्टेंट जिंस मु एठी कहि देबा चाहूची, हम सोसाइटी रे एटा देखियो को मिलिची कि केबे किछि कैरियर ऑप्शन न मिलले पिला प्रिपरेशन करियो पड़ंती। सांग माने करियर ऑप्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूज करछन, तो से माने भी सांग को फॉलो करिया स्टार्ट कर देंती। तो मु चाहूची कि मो भाई और भौणी माने भलसे करियर टा चूज करिवे। जदि सतरे आपण गवर्नमेंट जॉब फोकस अछि, आउ कोनसी लाइन आपण पे नाही, ताहाले आपण जानतु। आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस कि बेसी भी टाइम वेस्ट कले आपण पे बहुत प्रॉब्लम हे पारे। जेंति कि बहुत सारा स्टूडेंट मु देखुची कि प्रिपरेशन बहुत वर्ष धरी करछन, 5-6 वर्ष 7 वर्ष करछन, तापर किछि होउनी, आ तापर कोन हे जाउची, गैप हे जाउची, बहुत लंबा ईयर गैप हे जाउची। आ से लंबा ईयर गैप हेले आपण को गवर्नमेंट जॉब रे एलिजिबिलिटी एज तो पळौची, आ ता संगे प्राइवेट जॉब आपण को मिलिबार कम चांस। तो सेथि पे जदि आपण करूछंती, आपण अलसे डिसाइड करी करंतु। जदि करिया इच्छा अछि 2 to 3 इयर्स आपण प्रिपेयर करंतु, ताडो बेसी आपण प्लीज करंतु नि। कारण पिला लक्ष लक्ष संख्या रे ए एग्जाम गुडा दउछंती, किंतु सक्सेस केवल सम थाउजेंड्स होउछंती। तो एटा मु आपण डिमोटिवेट करिया कोनी, जस्ट आपण गोटे डायरेक्शन दबाव कोची कि आपण भलसे एनालाइज करंतु, निजो को अवेयर, निज विषय रे आपण अवेयर हे जाउ, एनालाइज करंतु कि आपण भीतर कोन स्ट्रेंथ अछि, आपण भीतर कोन वीकनेस अछि, तापरि आपण चूज करंतु करियर। तो एमती नै कि समस्त करछंती गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, तो आपण भी करंतु। तो चूज आपण जोटा भी चूज करियर अछि, आपण
काइंडली वाइजली चूज करंतु तो एमबीए विषय हेगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम विषय हेगला एबे मु थर्ड लाइन विषय कहया चाहूची सेटा हला आईटी इंडस्ट्री रे आपण करियर बनै परिबे एबे ही रिसेंटली मु काली परतन गोटे आर्टिकल पढुथली गोटे झियो आयुषी से कॉमर्स ग्रेजुएट कॉमर्स सरैला परे से इंटर्नशिप करथिला कि इंटर्नशिप पेड नथला और भलो अपॉर्चुनिटी नथिला तो सी कोन कला ना सी आईटी कोडिंग सर्टिफिकेशन कोर्स कला आ तापरे शेयर चैट गोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अछि सेइथरे सी इंटर्नशिप कला तापरे सी आजिका डेट रे आईटी जॉब करूची भलो पोस्ट अछि आ भलो सैलरी भी तार अछि तो मु कहया चाहू छी कि आईटी भी गोटे करियर ऑप्शन हेई पारे आपण जो भी स्ट्रीम रू हेइथांतु आपण आईटी कोडिंग कोर्स की अन्य को आईटी रिलेटेड कोर्स अछि सेटा करी की तापर इंटर्नशिप करी की आपण आईटी रे भी करियर बने परिबे आईटी रे स्कोप बहुत भलो अछि फ्यूचर भलो अछि आपण जानि छथि कि दुनिया आगु कोन हेइ चलछि आईटी ओरिएंटेड हेइ चलछि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हेइ जाइछि तो आईटी रो डिमांड आगु रहिबो आईटी रिलेटेड भी आपण करियर बने परिबे फोर्थ ऑप्शन मु कहया चाहू छी सेटा हला फ्रीलांसिंग जेमति कि आपण जदि मते पचरिबे सर आपण जॉब करछन ना बिजनेस करछन मु दीटा भितर किछि भी करनी मु गोटे फ्रीलांसर माने मु विभिन्न कंपनीज पे मु मल्टीपल कंपनीज पे काम करे मु मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल कॉलेजेस पे काम करे तो प्रोजेक्ट हिसाब रे मते मोर पेमेंटा मिले तो सेही जिनस भी आपण माने करि परिबे फ्रीलांसर भी आपण हेइ परिबे विभिन्न प्रकार जिनस अछि जोथरे कि आपण फ्रीलांसिंग करि परिबे जेमति कि रूप कुमार सर वीडियो एडिटिंग कोथले तो वीडियो एडिटिंग ऊपर आपण फ्रीलांसिंग करि परिबे फोटोग्राफी फ्रीलांसिंग करि आपण करि परिबे और तारे आपण जदि आपण जॉब करिया चाहौ जदि सिक्योर तो जॉब सांगरे भी आपण फ्रीलांसिंग करि परिबे आउ लास्ट करियर ऑप्शन चाहूची सेटा हला बिजनेस बहुत जण हम सोसाइटी रे तांकर धारणा अछि कि बिजनेस गोटे करियर ऑप्शन हुए आमे पाठ पढुछु माने हमहु चाकरी करियर अछि सेमति नाही आपण पाठ पढुछन आपण एजुकेट हबाकू आ अवेयर हबाकू निज विषय आउ सोसाइटी विषय तो एमती नहीं कि आपण माने जदि आपण पाठ पढिसंती तो आपण को कंपलसरी आपण को जॉब करिया को बाध्य तो आपण जॉब भी कर परिबे आपण फ्रीलांसिंग कर Sir, you are muted, sir. Arvind, sir, you are muted. Sir, mute ହେଇଗଲା। So now I'm audible? Yes, sir. Yes, So now sir. am I audible? Yes, sir. Okay. Yeah. तो सत्यजीत साहू लिखिसंती Yes, बिजनेस sir. या तो बिजनेस हाँ तो बिजनेस भी आपण करियर ऑप्शन चूज कर परिबे जदि आपण बिजनेस अवेयरनेस भलो अछि बिजनेस इंटरेस्ट अछि सेटा भी आपण करि परिबे तो एटा हला पांचटा लाइन मु आथरे समराइज कर देबी जदि मिस हो जाइछि एमबीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आईटी इंडस्ट्री जॉब्स देन फ्रीलांसिंग और बिजनेस ए पांचटा करियर ऑप्शन विषय मु डिस्कस करली आपण एटा करि परिबे इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बैकग्राउंड यू बिलोंग टू अच्छा आउ गोटे जिनस मते मने पड़ी गेला म क्विकली कहि दे एसएपी गोटे कोर्स अछि गोटे ईआरपी सॉफ्टवेयर कोर्स अछि सेटा मध्ये आपण करि परिबे एसएपी फिको मॉड्यूल अछि एसएपी एसडी मॉड्यूल अछि एसएपी एचआर मॉड्यूल अछि तो सेटा भी आपण को इंटरेस्ट हिसाब रे और क्वालिफिकेशन हिसाब रे आपण एसएपी भी करि परिबे ठीक अछि कारण एसएपी विषय एतपे फोकस अछि कारण आज इंडस्ट्री रे एसएपी मानको बहुत डिमांड अछि आ एसएपी रो एसएपी एक्सपर्ट्स मानको पैकेज भी बहुत भलो अछि एबे मो सबुट इंपोर्टेंट जिंस कहिया चाहूची एंड करिया पूर्वरु कि मते पिलाने पछार सर को कामटा को करियर चूज करिया कथा को प्रोफेशन चूज करिया कथा मु गोटे एटी हिंदी डायलॉग गोटे कहिया चाहूची बहुत बढ़िया डायलॉग आ बहुत ही पावरफुल डायलॉग मु चाहूची आपण माने एटा नोट डाउन करंतु तो जदी करियर चूज करिया रे आपण मानको प्रॉब्लम होची तो मोर ए डायलॉगटा मोर ए मंत्रटा आपण फॉलो कर परिबे काम वही करना जिसे करते करते आप कभी ठको ना मु फेर रिपीट करछि काम वही करो जिसे करते करते आप ठको ना एबे आपण मते देखि पाउछंदी मु जो लाइन रे अछि मु हार्डली केबे ठके बहुत समय जाय लेक्चर दे पारे ट्रेनिंग दे पारे कारण एटा मोर एक्सट्रीम पैशन तो सेही भले आपण लाइन चूज कर परिबे आउ गोटे फार्मूला भी मु जिबा गुरु देबा को चाहूची जोटा आपण हेल्प करिवो करियर चूज करिया को आईएएस फार्मूला मु रिक्वेस्ट करछि मो भाई भाउनी मानकू एई फार्मूलाटा लिखि देबा को आईएएस फार्मूला ठीक अछि आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट A stands for ability and S stands for scope.
इंटरेस्ट एबिलिटी एंड स्कोप जो करियर आपण जिबाकू चाहछोली देखंतु प्रथमे कि आपनका इंटरेस्ट अछि कि नै सेई लाइन रे एबिलिटी अछि कि नै सेई लाइन रिलेटेड आपण से कामटा करि परिबे कि नै लास्ट ला एस फॉर स्कोप फ्यूचर रे कोन स्कोप अछि भलो स्कोप अछि कि नै जदि एई तीनटा बेसिक जिंस ठीक ठाक अछि सेई करियर रो ताहले आपण सेई लाइन चूज कर परिया जदि आपण एई फार्मूला यूज करिके आपण सेई लाइन ता चूज करिके जिबे त आपण सक्सेसफुल हबार चांस ता आउरी बढ़ी सो लास्टली मु किछटा आउरी इंपोर्टेंट लाइंस कहिया को चाहूची इफ यू कैनॉट फ्लाई देन रन if you cannot run then walk and if you cannot walk then crawl but make sure you keep moving forward तुम चाहूची मो भाई और भौणी मानू को कि कीप मूविंग फॉरवर्ड जमा भी अटकंतुनु जदि भी करियर रे स्टक हे जायदी एई ऑप्शंस गुडा जो देली कि मोर कलीग्स माने देले सेटा आपण फॉलो करंतु आउरी भी किछि हेल्प दरकार हमें समस्ते हम ओडिसा वासी मानन को पे अछु ठीक अछि थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆମର Thank you, କିଛି sir. ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ 5ଟା ମାନେ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ କଣ କରିବେ ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ଆଇଟି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଯୋଉ 5ଟା ଜିନିଷ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ अच्छा ତାଙ୍କର मते पूछले गायत्री मैडम ଆଜ୍ଞା हिंदी रे ଆଜ୍ଞା कहबे ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ହିନ୍ଦୀରେ ଖାଲି ସେ 5ଟା ଜିନିଷ କହିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ठीक ଅଛନ୍ତି है नो ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି प्रॉब्लम हां तो मैं अब मैं ओडिया में ये बोल रहा था कि 5 जो कि कॉमन सब स्ट्रीम्स के लिए करियर ऑप्शन आप कर सकते हैं पहला हुआ एमबीए ठीक है दूसरा हुआ आपका गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन थर्ड हुआ आपका आईटी जॉब ठीक है आप आईटी इंडस्ट्री में आप करियर बना सकते हैं मैटर नहीं करता कि कहां से आप हैं कौन से बैकग्राउंड से आप सर्टिफिकेशन कोडिंग कोर्सेज वगैरह वगैरह कर सकते हैं बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है जैसे कि यूडेमी है कोर्सेरा है तो आप रिसर्च करके आप कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन है फ्रीलांसिंग फ्रीलांस मतलब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा एंड फिफ्थ इज आप बिजनेस को भी आप अपना करियर बना सकते हैं थैंक यू गायत्री मैम थैंक यू सर very much. So my dear student participants, if you have any question, you can ask. Some students they have written their questions in the chat box also. No, before going to question answer interactive session, now we request Dr. Jyoti Shankar Pradhan. Initially had some bandwidth issue. Now we request Dr. Jyoti Shankar Pradhan to complete his discussion. डॉक्टर ज्योति शंकर प्रधान आपण सुनी पारछंती हम कथा आज्ञा आज्ञा सर मु प्लेस चेंज कली आपनकर से नेटवर्क इशू पई की ओके सर वर्तमान सुनी पारछनी मते हां हां सुन के आपण कोन आज्ञा तो बेसिकली मु जस्ट पिलावान को कहया चाहिबी जो टीचिंग रे समान से करियर केमिति समान ये करिवे बनैबे जेटा कि आपनकर स्कूल टीचर पाखरु यूनिवर्सिटी टीचर तो मु गोटे एस्पेक्ट डिस्कस करी जोटा कि आपनकर प्री प्राइमरी टीचर्स और नेक्स्ट पार्ट जोटा हमर कहबा जदि हमें प्राइमरी टीचर कथा जदि कहबा इफ यू वांट टू बिकम ए प्राइमरी टीचर यू शुड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर +2 you can do a diploma in elementary education DLED which is a 2 years diploma course and you can also do a bachelor of elementary education BLED which is a 4 years integrated degree program and it is offered for the training teachers at the primary or elementary school levels and many states in India generally conduct the teacher eligibility test to recruit the primary school teacher in the government and government aided primary schools. And in our state, if you want to become a primary school teacher, you have to qualify the OTET, Odisha Teacher Eligibility Test conducted by the Board of Secondary Education. And another category of teacher is secondary school teachers, secondary and higher secondary school teachers. And generally, secondary school teachers are responsible for the teaching students of class 5 to class 10. And higher secondary school teachers are involved with teaching students for class 11 and 12. And as a secondary or higher secondary school teacher, you can teach specific subjects as per your graduation or post graduation degree.
And there are some requirement, there are some qualification, there are some criteria to become a secondary and higher secondary school teacher. And after completing graduation in any subject or any discipline, you can do a bachelor in education, which is popularly known as B.Ed degree, which is a 2 years teacher training program. Earlier it was 1 year programs up to 2014, and as per the regulation of NCT, now B.Ed program is 2 years. 2 years B.Ed program, 4 years integrated B.Ed and BSc programs. And a B.Ed degree is a basic requirement to pursue a career in teaching in a secondary and higher secondary school in our state as well as in our country. And you can do a master degree after graduation and then do a B.Ed to teach students in the higher secondary classes, or those who are in class 11 and class 12. And you can do also a master degree after graduation and then do integrated B.Ed M.Ed to teach the students in the higher secondary classes, or those who are in the class 11 and 12. Generally, in our state, Odisha, there are 4 universities. That is my university, Fakirman University, and Rajendra University, Balangir, Sambalpur University, North Odisha University are generally 4 universities mainly offering the integrated B.Ed M.Ed programs. And after completion of this course, you can start your career as a teacher from primary to university. Not only the teacher, you can also make your career as an administrator after clearing the exam OES, Odisha Education Service, conducted by the Odisha Public Service Commission. Okay, and you can also, after completion of the integrated B.Ed program, you can also make a career as a teacher educator in the city colleges, B.Ed colleges and M.Ed colleges. Okay, and to qualify for the central government run schools like the KBS, Kendriya Vidyalaya School, Navodaya Vidyalaya schools, and some other private schools, you will need to qualify in the Central Teacher Eligibility Test, which is popularly known as CTET, okay, which is conducted by CBSE. And the Central Board of Secondary Education, CBSE, generally conduct the CTET for the candidate to be eligible to teach at the secondary and higher secondary levels. Okay, and moreover, some states conduct a separate teacher eligibility test or state level eligibility test or a similar test conducted by the School Service Commission, Board of Secondary Education for recruiting the secondary level and higher secondary level teachers at the government run schools as well as the government aided schools. Okay, and in our state Odisha, to become a secondary school teacher, you have to clear Odisha Secondary School Teacher Eligibility Test followed by the CBT. First you have to clear, first you have to train elementary level or secondary level like B.Ed or DLED, then you should clear the OTET or OSTT, then CBT, computer based test. As you know, in National Education Policy 2020, it is also clearly mentioned to become a school teacher, you have to qualify first teacher eligibility test. First, you have to complete the 4 years integrated program, integrated teacher training program. Then you have to qualify the teacher eligibility test, followed by a demo class. It means to become a teacher, it will be difficult. If you compare the teaching profession with the other professions, in future it is more difficult to become a teacher. And last category is the college and university teachers. If you are interested in the teaching as a profession, teaching as a career, but only wish to teach in the college or universities, then you can prepare accordingly. Generally, college and university teachers are also called as a lecturer, assistant professor, associate professor, professor, etc. Okay, and they teach in the government and private colleges and universities in Odisha as well as in our country in India. And here question is arises, how to become a college or university teacher? There is some criteria, there is some requirement. The basic qualification to become eligible for a career in teaching in a college or university, you must have at least a master degree level with 55% marks. But in case of scheduled caste and scheduled tribe and other category, 50% mark is required. However, a PhD degree is mandatory. Hello? Hello? Hello. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Again, sir. Sir, କୁହନ୍ତୁ. So, PhD degree, beside the 55% marks requirement,
PhD degree is the mandatory for the promotion from the position of a lecturer to that of an assistant professor, associate professor to professor. And as per the UGC regulation 2018, PhD will be a mandatory qualification for appointment of the assistant professor in colleges and universities. Sir, you are muted. Sir, you are Okay. muted. Okay. Now I'm Sir, audible. muted. Okay. As per the UGC regulation 2018. Sir, you are muted. Sir, you are muted. I think it is automatically muted. Sir, I think you are. Now I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এটা ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ କିଛି ହଁ ସାର୍ ପଢାନ୍ତୁ। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେ କି ନିୟମ 18 ଯୋଉ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି କି from 2021 June ରୁ PhD will be a minimal qualification for the appointment of the assistant professor in the colleges and university. Sir, you are muted. Oh my God. ସାର୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ओके ठीक ଅଛି ମୁଁ ନଜର ରଖୁଛି ମୁଁ ନଜର ସେଇ ରଖୁଛି ପୁରା ଆଚ୍ଛା म्यूट हो रहा था। ହଁ ତ ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ଆମର ଏଜୁକେଶନ ମିନିଷ୍ଟର ହବାର ପରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ 2 years. It means it will be implemented from June 2023 onwards. 2023 ଜୁନ୍ ପାଖରୁ PhD mandatory qualification to become a college or university teacher. Okay? And after completing a master degree, you will need to apply and qualify in the National Eligibility Test (NET) conducted by the National Testing Agency. Earlier it was conducted by the UGC. Then from 2012 onwards it was conducted by the Central Board of Secondary Education, and nowadays National Testing Agency is conducting the NET National Eligibility Test, and it is conducted twice in a year. One is generally conduct in the month of December, another in the month of June. So you can apply accordingly after completion of your master degree. During master degree you can eligible to apply for NET. Okay, and a postgraduate degree and certification of eligibility in the NET are two mandatory requirements for becoming a university teachers or lecturers nowadays. And this is the highest position and the most sought career options for those looking for a career in teaching. Generally, besides the NET, some state conducts a state eligibility test for the recruitment of the lecturers in their respective states, in the colleges and university, like the West Bengal, UP, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, etc. So many states are conducting own state eligibility tests for the appointment of the assistant professor and lecturers in their respective states, colleges and universities. Okay. This is the basic criteria to become a university teacher. And teaching as a profession is not only limited to the teaching in the university, colleges. You can also get a job as a subject matter expert. As a subject matter expert, you can work in various organizations that are involved in online education. Okay, and if you are looking for a job in the teaching professions other than the teaching at a school or university, you could also look up for the opportunity in the entrance examination coaching institution. If you have a master's or PhD level education qualification, you can expect attractive salary package. And generally, in our state Odisha, two types of lectureships are available at the college level. One is for aided college, and another for the pure government college. And for the government college and university, Odisha Public Service Commission selects the candidates, and for the aided college, state selection boards conduct the written test and interview. This is the basic requirement to become a college and university teacher. Okay? And if you are focused and passionate enough to take up the teaching as a career, then dealing with such challenges can be cakewalk for you. And not only does a career in the teaching give you the power to nurture the leaders for tomorrow, but it is also instill in you the need to never stop the learning. And to pursue a career in teaching,
you must be aware of both the rewards as well as the challenges. In teaching career, teaching gives you the chance to inspire and empower bright young minds and build a better tomorrow. There are so many opportunities in the field of teaching. Earlier, people are thinking teaching job is an inferior job. Talented persons are not attracted towards the teaching profession. And Sir, you are muted. now I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. ओके मोर कहवा कथा कि नाउ एडेज ना जदि हम देखिबा टीचिंग गुटे कोनोसी अन्य प्रोफेशन टू कम नुह आगुर कोन थिला कि टीचिंग रे बहुत टैलेंटेड पर्सन आसुनथिले कम सैलरी थिला लो सर्विस माने कंडीशन थिला आज का डेट जदि हम देखिबा टीचर मानकर स्टेटस सर्विस कंडीशन बेटर देन द अदर प्रोफेशन जदि माने जदि गोटे स्कूल जदि हम हाई स्कूल रे कोनोसी पिला बीएड करी कि आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करी जदि कोन हाई स्कूल रे जॉइन करूची आज का डेट जो हमर ओडिसा रे जो कंडीशन जो इनिशियल अपॉइंटीज जो गवर्नमेंट जो प्रोविजन अराउंड 25,000 स्टार्टिंग सैलरी एंड इट इज अप टू 1 लाख रुपीज माने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से 5 वर्ष पर 6 वर्ष पर जो रेगुलर हो से पिला तो अराउंड 40,000 से पाइबो एवं रिटायरमेंट टाइम की अराउंड 1 लाख रुपीज सिमिलरली जदि जने पिला कॉलेज लेवल ले जॉइन करजी लेक्चरशिप जॉइन करजी अराउंड 50,000 सैलरी टू 2 लाख सैलरी per month depending upon his or her seniority and experiences. Similarly जदि हम कहबा जदि कई माने हमें यूनिवर्सिटी के पिला जॉइन कर जे असिस्टेंट प्रोफेसर तो स्टार्टिंग सैलरी 60,000 and to 2,50,000 per month depending upon his or her seniority and experiences. So there are so many opportunities in the field of teaching, so you can choose your career properly in a planned manner and definitely you can get success and in your life. Okay, thank you. Sir. Okay. Thank you very much, sir. It's now the time for question and answer session. So some students they have typed their questions in the chat box. And Varsarani Nath, she wrote that for science, botany and earth, what can be the career option? She is in science stream and she has botany as honors. So what does she opt for the career? Madam, ये क्वेश्चन टा का पे मो पाई ना आउ हमर anyone can answer. If you can answer, sir, you can. Yes, madam आप रिपीट करंतु मुझे सुनी पाले क्वेश्चन टा बॉटनी ऑनर्स जियो जने पढुची बॉटनी ऑनर्स नेकी से 50 मोर कैरियर ऑप्शन कोन हे पारे देखंतु अन्य प्रोफेशन कथा मु जिबि नै जदि आपण टीचिंग प्रोफेशन कैरियर करबा चाहछंती टीचिंग रे भलो ऑप्शन अछि आपण बीएससी परे आपण गुटे एमएससी करंतु बॉटनी रे एवं एमएससी करा परे आपण ड्यूरिंग एमएससी आपण नेट एग्जाम दे परिबे जोडा मु कहली कि जोडा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बटन कंडक्ट करूची प्लस तमर आईसीएसआर भी तमर साइंस से भी कंडक्ट करूची वर्ष को 2 थर नेका समान कंडक्ट करंती यदि सेटा हमें तुम क्वालिफाई करूचो ताले नाउ माने यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ता छडा से नेट जो टॉप रैंक गुटे अछि हमें कोठी जीआरएफ जो फेलोशिप जोडा गवर्नमेंट अराउंड 30 to 35,000 फेलोशिप पाइबो ता सहित सेही फेलोशिप पाई कि पीएचडी करिवो पीएचडी कला पर बहुत अपॉर्चुनिटी अछि जे जूनियर साइंटिस्ट में जॉइन करि पारिबो एज ए फैकल्टी मेंबर भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉइन करि पारिबो ए सब अपॉर्चुनिटी गुडी अछि किंबा जदि पीजी करिया चाहुन सॉरी जदि एमएससी करिया चाहुन जदि तुम सिंपल बीएससी पर आउ जस्ट जॉब बार को तुम इंटरेस्टेड अछ ताले मु कहबी जदि टीचिंग कथा कहबी ताले गोटे बीएड डिग्री करो बीएड डिग्री कला पर हमर ओडिसा रे जो इंडिया रे एमएस साइंस टीचर कर बहुत शॉर्टेज अछि बहुत डिमांड भी अछि So after 2 years of BEd, you become a teacher at the secondary level. Okay? Sir, chemistry honors BSc করে কানা কলে ভালো হয় Sorry, chemistry honors? Sir, BSc chemistry honors সলা করে কানা কলে ভালো হয় chemistry रे कोइ honors plus कला परे कोन कर परबे एक्स्ट्रा टीचिंग आरो कोन अछि टीचिंग छड़ा जति मु तो बेसिकली एजुकेशन फैकल्टी जे जति मोर जति नॉलेज अछि
तो आपनकर जो केमिस्ट्री माने साइंस जो ये पर आपन लैब गुडे अछि बहुत गुडी को जो मेडिसिन कंपनी सेते आपन जॉब करिबारे बहुत अपॉर्चुनिटी अछि ता सहित जो आपन जो हमर इंडस्ट्री जो अछि केमिकल इंडस्ट्री सेते जे केमिस्ट भी आपन जॉइन करि पारिबे सर जियोलॉजी रे कौन लाइन हवा बीएससी जियोलॉजी रे सर बीएससी जियोलॉजी लाइन कौन अछि नहीं टीचिंग मु जनरली टीचिंग कथा ही कहि पारिबी जेहेतु मु माने एज ए माने यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स तो टीचिंग ऊपर जदी कार अछि किछि मते कहले भलो होंता Yes, sir. टीचिंग रिलेटेड करियर फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी Hello. Nahi, apart from Jyoti Shankar Pradhan, we have two other experts, Sri Aurobindo Das and Rupkumar Pradhan. So when the questions will come from the students, so I request all of our experts to get ready and instantly from their side they can try to answer the questions raised by the students. So not only it is fixed to the Dr. Jyoti Shankar Pradhan, so since it is related to many career options, so now I request both Sri Arvind Das and Rup Shankar Pradhan to address. And again, I request all the student participants to mute yourself. During discussion, please mute your audio. Thank you. Now we can go for the question answer interactive session. मु गोटे क्वेश्चन देखि परछि चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है अग्निपिता स्वाइन है कि अरविंद सर प्लीज डिस्कस अबाउट आईटी इंडस्ट्री तो Yes, आईटी you can address. तो आप सकते हैं आप और आर्ट्स ऊपर कौन को है तो उसके बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंटर्नशाला, ठीक है, तो वहां से आपको बहुत सारा इंटर्नशिप ऑप्शंस मिल जाएगा और उसके बाद आप आईटी लाइन में आप जा सकते हैं। एंड फ्रीलांसिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रीलांसिंग में बहुत तरीके का फ्रीलांसिंग हो सकता है। जैसे कि आप आईटी में भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर का फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर का फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनर आप बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। तो ये सारा करियर ऑप्शन रहेगा। सर प्लस 3 आर्ट्स परे पिला माने आर्ट्स कोन के करियर कौन करियर बेटर जे कोर्स सर प्लस 3 आर्ट्स परे प्लस थ्री आर्ट्स परे ओके प्लस 3 आर्ट्स के बाद आप एक तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है, और पीएचडी भी आप कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च लाइन में जाना है, ठीक है। उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि मोस्टली जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो टीचिंग लाइन में जाते हैं। और एक लाइन पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मेरे रिलेटेड है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, ये भी आप बन सकते हैं। इसका डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट्स में इसका डिमांड बढ़ रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं एज एन आर्ट स्टूडेंट, क्योंकि आर्ट स्टूडेंट नॉर्मली उनका इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, तो ये एज अ ट्रेनर भी आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ने लिखा है प्लीज डिस्कस अबाउट एमसीए। एमसीए अगर आप बीसीए किए हैं तो आप एमसीए कर सकते हैं, या फिर बीएससी इन आईटी अगर आप किए हैं तो आप एमसीए आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। सर प्लीज आ गोटे कथा पचारे चाहूँ जी। हेलो यस यस हेलो यस पचार सर जदि आईटी इंडस्ट्री लाइन में जीवा चाहिए चल प्लस 3 कॉमर्स पर आईटी इंडस्ट्री लाइन में जीवा चाहिए को कोर्स करिया भलो हबो? से कोडिंग कोर्स कर परियो और बहुत सारा कोर्सेस एटा पर रिसर्च करियो पड़ियो, ठीक अछि। बहुत सारा सर्टिफिकेशन कोर्सेस आसी गलेनी, तो सेटा आपण करि गोटे तो हला कोडिंग। सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऊपर डिप्लोमा करले केमदी? कोडिंग कोर्स हला सबुठी डिमांडिंग आईटी रो, तो कोडिंग कर परिबा। आउ जदी अन्य भी बहुत सारा अछि सेटा भी रिसर्च करी कि तमे सेटा भी करबे, किन कोडिंग होछ सबुठी डिमांड, तार बहुत सारा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेस आसी गले। सर रुकुमार सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करले केमदी हो? कंप्यूटर से आप तमे एबे कोन करछ? प्लस 3 कॉमर्स। प्लस 3 कॉमर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आउथरे काई करिवो? 4 इयर्स वेस्ट काई करिवो तमे? बुझि
बुझिपरछ सर आईटी इंडस्ट्री लाइन में जाऊ चाहूँ से कंप्यूटर साइंस रे डिप्लोमा करिया चाहूँ जमा दरकार नहीं, मु तो कहि सारली ना, मु गोटे एग्जांपल देली जति तुम सुनतियो बोल से मैं तो एग्जांपल दिया, एग्जांपल में बता आयुषी एक लड़की वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद वो आईटी इंडस्ट्री में गई विदाउट डूइंग बीटेक इन सीएस और आईटी। तो आउ थरे बीटेक कहीं करियो तुम किछि दरकार बीटेक न करी केमिति आईटी केमिति इंटर्नशिप करी जिबा पड़िबो कौन कहले अभिषेक सर बीटेक ମୁଁ କହିଲି କି बीटेक न करी केमिति आईटी इंडस्ट्री लाइन में जिबा पड़िबो कोर्स करले से जाई परिबो। आई थिंक मो आंसर ऑलरेडी देई सलेनी कोडिंग आ बहुत सारा सर्टिफिकेशन कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स करी कि आईटी इंडस्ट्री एंट्री कर परिबो आ इंटर्नशिप भी जदी कर दबो तारे आउरी चांसेस बढ़ी जिवो। सो सर्टिफिकेशन प्लस इंटर्नशिप विल हेल्प यू टू फेच एनी आईटी जॉब। या नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्रणाम सर। प्रणाम सर थैंक यू प्रणाम सर। हां प्रणाम सर जो एमबीए के बारे में जानना चाहता हूँ। एमबीए के बारे में जानना चाहते हो तो एमबीए के बारे में बहुत सारा एग्जाम्स होता है जैसे कि कैट होता है जी सर कैट दे सकते हो जैट दे सकते हो और एनमैट एग्जाम है नरसिंह कॉलेज का, स्नैप एग्जाम है सिम्बायोसिस कॉलेज का, आईआईएफटी या कुछ ऐसा भी है। ठीक है तो ये सारा है और उसके अलावा अगर ओडिशा में करना चाहते हो तो ओडिशा जेई भी आप देकर ओडिशा जेई और आत्मा जैसे एग्जाम्स उसको क्लियर करके भी आप एमबीए जी सर जो आप बोल रहे हैं कि एमबीए में जो चौथा में रूरल मैनेजमेंट या एमबीए स्पोर्ट मैनेजमेंट वही के बारे में जानना चाहते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपको यहाँ पर ओडिशा के बारे में अगर मैं बोलूं तो एक्सआईएमबी जी सर इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज इन ओडिशा जी। तो अभी तो मैनेजमेंट कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं इसके जी सर मैं तो काइंडली कांटेक्ट एक्सआईएमबी। ठीक है एक्सआईएमबी कॉलेज। यस सर थैंक यू सर। हेलो 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 सर हेलो 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 सर सर आर्ट्स रो सोशियोलॉजी ऑनर्स पर कोन कोन यस प्लीज। हेलो सर देवस्मिता ने एक क्वेश्चन लिखा है कि सर क्या बीएससी के बाद एमबीए करना अच्छा रहेगा? हाँ अगर उस लाइन में जाना है तो क्यों नहीं, लेकिन मेरा वो जो फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा आईएएस फॉर्मूला इंटरेस्ट एबिलिटी और स्कोप देखकर आप जा सकते हैं और स्कोप तो बहुत ही अच्छा है एमबीए का। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करें एमबीए का हमेशा से ही बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है सर बॉटनी सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में कुछ बताइए सर। क्या जानना चाहते हैं आप? कर चुके हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स? मैं हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी तो क्या करेंगे? ग्रेजुएशन आप इसके बाद आप जॉब कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं या फिर 6 ऑप्शंस दिया उनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सर कौन से कोर्स करना पड़ेगा वो पता नहीं सर, इसलिए थोड़ी बता देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बोलो। इकोनॉमिक्स के सर बाद क्या कोर्स करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद? कौन सा कोर्स वो आप पे डिपेंड करता है ना। मैं आपको 5 या 6 लाइन बता दिया हूँ, आपके लाइन रिलेटेड आप कर सकते हैं या फिर आप करियर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है तो वो आपको डिसाइड करना है आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका एबिलिटी क्या है और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके हिसाब से आपको चूज करना है। स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और एमबीए इन फाइनेंस भी आप कर सकते हैं। अगर आप एमबीए लेना चाहेंगे तो एमबीए इन फाइनेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो एमबीए फाइनेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। हेलो 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 नहीं शुणु समस्ते हालो हालो कहले जदि समस्ते आम हालो हालो कहवा ताले तो असुविधा होची। तेणु प्रथम कहुई जनक पर जड़े कहतु प्रथम आप ना कहतु कौन सब्जेक्ट पढ़ुं कहतु कौ कॉलेज पढ़ुं कहतु एवं निर्दिष्ट कौन प्रश्न अच्छी कहतु आ जड़े जो कहूँ अन्य मैंने शुणु एवं जनकर सरला आउ जड़े कहतु आ समस्ते आम हालो 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 कहले ये जो वर्चुअल मीटिंग एटा फिजिकल मीटिंग नुहे आम समस्ते जानवा दरकार आम समस्ते कनेक्ट होते गोटे वर्चुअल मीटिंग प्लाटफॉर्म रे सो विल हैव टू वेट विथ पेशेंस एवं जड़े जो प्रश्न पचारुची आउ जड़े धैर्य सहित अपेक्षा कर सारा से प्रश्नर उत्तर सरला
तापरे नब एवं चाट बॉक्स दिया है चाट बॉक्स रे मध्य तमे तुमर रेफरेंस देइकिनी प्रश्न मध्य कर परिबो कंटिन्यू सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। सर हेलो सर नमस्कार। मैम मैम मो नमित अनम्यूट करो निज को। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार एमती कही आ समय नष्ट न करके सीधा आस तुम ना कह एवं कौ कॉलेज रे पढ़छ कौन प्रश्न अछि मैम मो नमिता पंडा। हेलो सर मैम नमस्कार मु नमिता पंडा कहूँ। मु नमिता पंडा कहूँ भद्रक रू ग्रेजुएशन 3rd ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर स्टूडेंट। मोर इंटरेस्ट अच्छी कि मु जर्नलिज्म एमजी एमसी कोर्स मैथ्स कम्युनिकेशन करिया पई। तो मु चाहूँ कि को कॉलेज रे कले कि को यूनिवर्सिटी रे कले मते बेटर हे पारिबो टिके ए लाइन पे। ओके नमिता सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ सर सुन पारुची आपनकर आवाज। नमिता जर्नलिज्म के लिए आप उत्कल यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं, वहां पर जर्नलिज्म रिलेटेड बहुत सारा कोर्सेस है। अगर मैं उड़ीसा का बात करूं, और एक है सिम्बायोसिस, ठीक है, तो सिम्बायोसिस का भी जर्नलिज्म के बहुत सारे कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, सिम्बायोसिस पुणे। तो वहां पर भी आप कांटेक्ट करके आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। हेलो सर। सर हेलो सर। हेलो सर। हां तमे ना सर। को এবং प्रश्न पचार। सर मु विष्णु महांत कहतली हरिचंदनपुर कॉलेज केउंझर रू। तो आर्ट्स सोशियोलॉजी ऑनर्स पर कोन करले भलो होबो? मीनिंगलेस क्वेश्चन है बताता। क्या क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन बोलिए। से हरिचंदनपुर कॉलेज रू कहउचंती आ से बर्तमान आर्ट्स पढुचंती, सोशियोलॉजी तांकर सब्जेक्ट अछि। सोशियोलॉजी परे से कोन करिया पई चाहउछे से कहउचंती। सोशियोलॉजी परे दुटा कथा अछि, तुमे आइदर सोशियोलॉजी रे तमे पीजी करि परिबो किंबा जदि तुमे प्रोफेशनल कोर्स रे करिया पई चाहउछो ताले सोशल वर्क्स, सोशल एमएसडब्ल्यू जोटा अछि मास्टर इन सोशल वर्क्स, सेथिरे मध्य तमे काम करि परिबो जदि तमे पीजी करिया पई चाहउछो। ये दुटा तमर सब्जेक्ट रिलेटेड कैरियर रही। बाकी जहाँ कहले अन्य माने जो कथा कहले तुम जदि जॉब ओरिएंटेड हबो टीचर्स लाइन रे मध्य जीवा पई जीवो, जहाँ डॉक्टर ज्योति शंकर प्रधान सूचना देउथिले। बाकी एमबीए रिलेटेड जहाँ कहउथिले अरविंद दास जो कथा कहउथिले तुम एमबीए प्रोग्राम रे जॉइन करि परिबो, बा इकोनॉमिक सर्विस रिलेटेड जो कथा हबो रूप कुमार प्रधान जो कथा कहउथिले तुम सेथिरे जॉइन करि परिबो। तुम पई बहुत स्कोप अछि। जहाँ कहते अरविंद दास आईएएस तुम जोटा रहा दरकार इंटरेस्ट एबिलिटी एंड स्कोप ये सब जिनस को निजे एनालिसिस कर। तुम जो निज कोर सब्जेक्ट रे पीजी करिया पई चाहतो सोशियोलॉजी रे पीजी करि परिबो किबा अलाइड प्रोफेशनल कोर्स करिया पई हेले मास्टर इन सोशल वर्क मध्य ऑप्शन अछि। नेक्स्ट नेक्स्ट कहउतली केउंझर वुमेन्स कॉलेज रो। सर मोर क्वेश्चन थिला कि आफ्टर बॉटनी ऑनर्स मु चाहूची कि एम फार्मा करबी आइदर एमएससी इन फॉरेस्ट्री करबी। तो सर कोटा बेटर ऑप्शन हबो एवं को कॉलेज रे कले तार कैरियर ओरिएंटेड माने कोन अछि टिके सुविधा होइतिबे। सर म्यूट अछि। सर म्यूट अछि, अरविंद सर म्यूटेड। हाँ हाँ एम फार्मा विषय जदि मते पचारछ ताले एम फार्मा मु जेहेतु गोटे कॉलेज यूनिवर्सिटी संग गोटे एसोसिएटेड अछि, मु सेठी ट्रेनिंग दिए। तो मु जानि छी कि सोआ यूनिवर्सिटी हमर ओडिसा रे एम फार्मा कोर्स बहुत सेठी भलो। तो सोआ यूनिवर्सिटी आपण देखि परिबे, ट्राई कर परिबे फॉर एम फार्मा। आ एम फार्मा जो कोर्स अछि सेटार बहुत भलो डिमांड अछि, कारण फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रो सबोले डिमांड रे गोटे एवरग्रीन ब्रांच, ठीक अछि। तो एम फार्मा बहुत भलो रहबो। आ जो सेकंड ऑप्शन टा कहले सेटा कोन कहले फॉरेस्ट्री। आज्ञा फॉरेस्ट्री आज्ञा सर फॉरेस्ट्री विषय मु कहि परिबिनी सॉरी, बट एम फार्मा रो बहुत भलो डिमांड अछि। सोआ यूनिवर्सिटी रे आपण एम फार्मा करि। सर बीएससी आफ्टर बॉटनी पर एम फार्मा रो जो ओजेई रे देकी ना एम फार्मा करि हबो तो आज्ञा सेटा तुम टे देखियो पड़ियो। हां करि हबो, काई करियो, ठीक
नहीं सर सर सर्च करथिले सर कहले कि बी फार्मा परे किंतु डायरेक्ट एम फार्मा भी अछि किंतु से कहले माने डायरेक्ट जेदी अछि तमे करि परिबो जेदी अछि बहुत भलो कथा तमे करि परिबो आउ तमे कॉलेज पछले तो सोआ यूनिवर्सिटी रे एम फार्मा बहुत थैंक यू सर आ फार्मा रो इंडस्ट्री एवरग्रीन इंडस्ट्री इट्स अ वेरी वंडरफुल करियर अरविंद सर आपण जो कहले सर अरविंद सर आपण जो कहले जर्नलिज्म पुणे रे करबा पई कांट्रैक्ट करबा पई केमिति कोन कांट्रैक्ट हे परिबो इंटरनेट अछि हैला सिम्बायोसिस सर्च कर दो सिम्बायोसिस बहुत फेमस कॉलेज तो आराम से कांटेक्ट नंबर मिल जिवो हैला सिम्बायोसिस अच्छा थैंक यू सर जेंति उत्कल यूनिवर्सिटी ओडिसा रे सर्च मार दबो आसी जिवो हैला सर प्रणाम मो नाम मीरा बेहेरा मठपुरा कॉलेज रु कहूची सर मो +3 फाइनल इयर साइंस ऑनर्स करूची या पर लॉ करिया पई चाहूची केमिति कोन गवर्नमेंट रे लॉ केमिति करिवि सेटा प्रोसेस जानि पारु लॉ पे गोटे एग्जाम अच्छी सीएलएटी क्लैट एग्जाम ठीक अछि तो ता बेसरे टिके आज रिसर्च करो तो क्लैट एग्जाम देखि क्रैक करी तमे लॉ लाइन रे जाई परिबो टिके सेटा रिसर्च कर दो क्लैट एग्जाम ठीक अछि आज्ञा Hello sir, myself one of the Raut. Hello Arvind sir. Hello. Please. Hello Arvind sir. Hello. Yes, please. Go. Myself one of the Raut. First of all, good afternoon everyone. Actually, I am studied at Lakshman Balaji Degree College, Angalo. Actually, my question is how I started in career in information technology department, IT department, and which college is best for in Odisha. Please tell me about something, Arvind sir, please. What presently what you are doing? Actually, I am doing in BSc Computer Science honors in final year. You can go for MCA. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Hello sir, my name is Sandeep Kumar Behra. Government colleges are there, private colleges are also there. Okay, government colleges are there, private colleges are also there. So do research about that. So you can do MCA. Okay, thank you Hello sir. Thank you. Hello. सर आपण जो आईएएस से कहले जे कोन स्टेज कैरियर चाहिए भाई सर इंटरेस्ट एबिलिटी स्कोप सर मन को पेरेंट्स करो इंटरेस्ट नाही किंतु मोर इंटरेस्ट अछि मो पेरेंट्स कहउछन तू कॉम्पिटिटिव लाइन जा किंतु कॉम्पिटिटिव लाइन रे मोर इंटरेस्ट नाही किंतु एबिलिटी स्कोप अछि तने म कोन करबी तमरे इंटरेस्ट कोथर अछि सर मो इंटरेस्ट अछि टीचिंग लाइन इंटरेस्ट अछि पीजी करकी लेक्चरशिप इंटरेस्ट अछि एबिलिटी स्कोप तीनटा मोर अछि किंतु मो पेरेंट्स को इंटरेस्ट नाही जे से पढिया को चाहू नांदी पीजी करिया को चाहू नांदी कारण से पैसा खर्च करले पढिबी ना नहले मो मोर एकुटिया किछ पढि पारिनी किंतु ताकर इंटरेस्ट अछि कॉम्पिटिटिव लाइन रे किंतु मोर इंटरेस्ट नाही किंतु कॉम्पिटिटिव लाइन रे मोर एबिलिटी अछि स्कोप तो अछि किंतु इंटरेस्ट मोर ना तले म कोन करबी टीचिंग लाइन जीबी ना बाध्य होगी ना कॉम्पिटिटिव लाइन जीबी तो मु मोर ओपिनियन जदी मते पचास मु कहबी जोथरे इंटरेस्ट अछि सेटा ही चूज करिया कथा आ जदी पेरेंट्स एग्री होनाती तो पेरेंट्स गोटे टाइम से पेरेंट्स एग्री हेबे पेरेंट्स को बुझिया पड़िबो कन्विंस करिया पड़िबो ताको एंड पॉइंट देखिया रछि ताको देखिया रछि कि हां मु एई जिंस मु करबी आ एई बेनिफिट्स मिलिबो मते एई करियर रे ताको कन्विंस करिया रछि कारण मु भी जो लाइन रे आज का डेट रे अछि मु बीटेक करछि ठीक अछि आउ मोर पेरेंट्स रे एक्सपेक्टेशन थिला कि मु को आईटी इंडस्ट्री रे कि अलगा टेक्निकल इंडस्ट्री काम करे किंतु आज का डेट रे मु करूनी मु लाइन चेंज करिछि कारण एटा मोर पैशन हम पैशन को फॉलो करछि इनिशियली स्ट्रगल थिला इनिशियली पेरेंट्स माने अपोज करथले किंतु मु आस्ते आस्ते मु काम जेतु मु भलो काम करी आसिली तो पेरेंट्स माने भी आस्ते आस्ते मते सपोर्ट करिया स्टार्ट कले ठीक अछि तो इंटरेस्ट जोथरे अछि सेटा करिया कथा कारण जो जिंस रे इंटरेस्ट नै सेटा खाली स्कोप को देखि करबो तो गोटे टाइम आसीबो सेथरे 4-5 वर्ष परे तमे निजे भाबिबो कि यारे मु कोन करछि जोटा कि मु देखुछि आज का डेट रे बहुत सारा मोर सांग अछंदी इवन सीनियर्स माने अछंदी जो माने गोटे लाइन रे पसित जाउछंदी पैसा को देखि कि अपॉर्चुनिटी को देखि कि किंतु ता परे गोटे टाइम रे रियलाइज करछंदी कि अरे मोर तो इंटरेस्ट नै मु एटे कोन करछि तो मु मते जदी पछरे मु कहबी कि जदी इंटरेस्ट अछि टीचिंग लाइन रे गो फॉर टीचिंग लाइन एंड टीचिंग लाइन भी आई थिंक ज्योति प्रकाश सर कहछंदी कि बहुत तार स्टेटस बहुत इंप्रूव हेलानी आगु को आहुरी इंप्रूव हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो रिलीज हेछि गवर्नमेंट रो तो सेई थरे टीचिंग को बहुत फोकस करा जिवो
ठीक अछि आ इवन आउ गोटे भी जिंस कहिसथि गवर्नमेंट की बीएड कोर्स जोटा सेटा गोटे फॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स हिजिबो 4 इयर्स रो कोर्स हिजिबो तो टीचिंग विल डेफिनेटली बी अ गुड ऑप्शन के टीचिंग रे पैसा अछि अपॉर्चुनिटी अछि और रेस्पेक्ट भी अछि यू कैन गो फॉर टीचिंग तो मु एथे टिके ऐड करबी सर आप अगर परमिशन देबे तो मु एथे ऐड करबी अरविंद बाबू आगे आगे प्लीज सर प्लीज हां तो से जो पिला पचारथला कि मु को प्रोफेशन जीबी मोर इंटरेस्ट एथरे अछि कि मो आपन एथरे नाही अन्य कोथरे अछि किंतु जोडा आपन जोडा कहले सेटा बिल्कुल ठीक कथा कहले कि देखो पिला माने तुम जहाँ करबा चाहू जो थे तुम इंटरेस्ट अछि तुम सेथरे जाओ बहुत ऑब्स्टेकल आसीबो तुम जोडा मनी जो कहले बापा मते सपोर्ट न करले मु केमिति पाठ पढिबी बहुत ऑप्शन अछि आज का डेट रे तुम कोठी टाउन रे रहिबो दुटा ट्यूशन धरले मासु 5000 इनकम करियो तुम तो ट्यूशन करी तुम मते इंटरेस्ट सेथरे तुम जाई परिबो तेणु सब बड़ कथा निजर इंटरेस्ट जोटा कि आम अरविंद बाबू कहले आईएएस इंटरेस्ट एबिलिटी स्कोप ये तीनटा जिन देख प्रथम तुम देख कि तुम जो फील्ड जावाक चाहो से फील्ड इंटरेस्ट अच्छी कि ना सेकेंड थिंग तुम एबिलिटी अच्छी कि ना से फील्ड जावाई स्कोप अपॉर्चुनिटी कौन अच्छी मार्केट रे जब यही तीनटा जिन अच्छी मुझे कहबी तुम बापा को कन्विन्स करने चेष्टा कर कन्विन्स करके तुम से जा आउ मनी केबे ऑब्स्टेकल हम ना आउ टीचिंग कथा कहबी टीचिंग जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे कहै कि क्लियरली प्रत्येक यूनिवर्सिटी रे एजुकेशन डिपार्टमेंट खुलिबो प्रत्येक एजुकेशन यूनिवर्सिटी रे ता सहित गोटे टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट खुलिबो आउ जोटा कि आगुर हमर टीचर मानकर स्टेटस एते भलो नथिला जोटा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आगुर भी माने वर्तमान आजिका डेट रे भलो स्टेटस अछि सैलरी अछि सर्विस कंडीशन भलो अछि रेस्पेक्ट अछि तो एटा को तुमे एज ए प्रोफेशन नहीं पारिबो तो आउ गोटे जिनस एथरे मनस्विनी सॉरी लोपाश्री तुम क्वेश्चन गोटे देखो चैट बॉक्स रे सर एजुकेशन ऑनर्स के बाद क्या करना अच्छा रहेगा लोपाश्री नायक अच्छा यस सर ना तू लेफ्ट ये अच्छा ओके ओके आप देखिए लोपाश्री एजुकेशन ऑनर्स के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है अगर आप करना एजुकेशन ऑनर्स के बाद आप एमए कर सकते हैं एमए एजुकेशन कर सकते हैं यस आप आपने मैसेज दिया ना एजुकेशन ऑनर्स के बाद क्या करना अच्छा रहेगा तो उसके बारे में बता रहा हूँ ठीक है तो आप एजुकेशन ऑनर्स के बाद आप एमए कर सकते हैं ओके एमए तो एमए एजुकेशन कर सकते हैं फिर उसके बाद आप पीएचडी करके आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं अगर आप मान लीजिए हायर एजुकेशन में जाना नहीं चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन एजुकेशन होने के बाद आप सीधे बीएड भी कर सकते हैं या बीएड के अलावा और भी किसी का भी क्वेश्चन था सवाल था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन इन आर्ट्स स्ट्रीम व्हाट कैन आई डू तो सेकंड सर वही चीज मैं बताना चाहूंगा देखिए आर्ट्स के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है खास करके आप देखिए अगर आपको हायर स्टडी करना है तो आपको मास्टर डिग्री करना पड़ेगा अगर मान लीजिए आपको हायर स्टडी नहीं करना है इसी बेसिस पे मुझे जॉब करना है तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है कोई पूछ रहा था इकोनॉमिक्स स्टूडेंट में क्या करूं आप देखिए मैं तो बताऊंगा इकोनॉमिक्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है आप बैंकिंग सेक्टर में जाइए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पोस्ट निकलता है आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर हायर सेकेंडरी आप उसमें ट्राई करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उसको प्रिपेयर करिए आप उसमें जाइए और आप ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे जैसे मान लीजिए आपका उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या स्टाफ सिलेक्शन करने जो कमीशन से जो रिक्रूटमेंट होता है बहुत सारे पोस्ट है आप इसमें जा सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं पहले तो आपको खुद का इंटरेस्ट खुद का वीकनेस खुद का जो स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा मेरे पास क्या कमी है मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है मैं क्या चीज कर सकता हूँ मैं क्या कर पाऊंगा या कर पाऊंगी वो चीज़ आप देखिए उसके बाद आप करियर अपना डिसाइड करिए और जो पूछ रहे ना कि मैं पेरेंट्स के हिसाब से जाऊँ या मैं अपने हिसाब से जाऊँ आप उसके लिए आज एक मूवी आया था 3 इडियट्स आप उसको देख लीजिए आपको खुद समझ जाएंगे कि मुझे किसके साथ जाना है मेरे इंटरेस्ट के साथ जाना है तो मेरा पेरेंट्स के साथ जाना है तो ये क्या देखिए और एक क्वेश्चन था मनस्विनी रथ हेलो यस सर नमस्कार मनस्विनी रथ अच्छा यस सर हाँ तमर क्वेश्चन थिला कि सर इंटीग्रेटेड बीएड एमएससी ओडिसा रे कोठी अछि देखा मुझे कहबी इंटीग्रेटेड बीएड जो एमएससी पर आमर जो मुझे कहली ओडिसा रे 4टा यूनिवर्सिटी रे इंटीग्रेटेड बीएड एमएड प्रोग्राम वांस जदि तुम से प्रोग्राम में जॉइन करूछ ताले तुम बीएड भी तुम डिग्री मिलिबो ता सहित एमएड भी डिग्री मिलिबो ता सहित ता पई मिनिमम क्वालिफिकेशन होउची एमएससी और एमए जेमिति आम यूनिवर्सिटी फकीरमोहन यूनिवर्सिटी रे आमे 50टा प्रोग्राम और 50टा सीट अछि इंटीग्रेटेड बीएड एमएड रे
से 25टा सीट 25 सीट रिजर्व फॉर साइंस स्टूडेंट एमए स्टूडेंट एंड 25 सीट्स रिजर्व फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। तो यही कोर्सटा तुम कर आम यूनिवर्सिटी अच्छी राजेंद्र यूनिवर्सिटी बलांगीर अच्छी संबलपुर यूनिवर्सिटी अच्छी आम नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी अच्छी। आउ गोटे कथा रहा तुम जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कथा जो कहवा सॉरी इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड जो आफ्टर हायर सेकेंडरी आफ्टर +2 यदि कहीं चाहिए ना मुझे टीचिंग करियर अच्छी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहूँ जदि गोटे पिला टीचिंग रे जबार अच्छी से कहीं से बीए कर एमए कर कि बीएससी कर एमएससी कर पुणी ये टाइम वेस्ट करके आसो जदि टीचर हबार अच्छी सिंपली यू डिसाइड तो देन यू जॉइन द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आफ्टर हायर सेकेंडरी जोटा कहूँ आम बीएससी बीएड बीए बीएड जोटा +2 पर मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 पर गोटे पिला से कोर्स से जॉइन करि पारिबो तापाई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए +2 साइंस और +2 आर्ट्स तो सेतरे दुईटा डिग्री से पाइबो बीए बीएड पर डिग्री पाइबो आ बीएससी बीएड डिग्री पाइबो आ सबुठ बड़ कथा एटा हला जदि हम ग्रेजुएशन करते 3 वर्ष तापर बीएड करबा 2 वर्ष हमको 5 वर्ष लागिवो किंतु आमे एई जो बीए बीएड कि बीएससी बीएड करबा हमर 4 वर्ष रे हमर ग्रेजुएशन भी हेजिवो हमर बीएड डिग्री भी हेजिवो आ एई डिग्री को भी एनईपी हमर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस करिछि पर्टिकुलर कहिछि कि टू बिकम ए टीचर इन फ्यूचर कथा है program will be a minimal qualification to become a school teacher कथा है बुझि पारछो तनु तुम आराम से जाई पारिबो काहे टाइम वेस्ट करिवो हमर एडी पिला माने मु देखिछि हमर जो एमएससी हमर जो प्रोग्राम जे अछि बीएड एमएड बीएड इंटीग्रेटेड बीएड एमएड इंटीग्रेटेड हमर पिला माने एमएससी करूचंती एमफिल करूचंती पुनी एई लाइन आछंती पुनी एडी 4 वर्ष पाठ पढिबे सॉरी 3 वर्ष पाठ पढिबे 3 वर्ष बोला पर पुणी से रेलवे बैंकिंग ये सब पिला को कहे तुम जो रेलवे बैंकिंग रे जिबा थिला तुम एते टाइम के वेस्ट कलो बीए बीएससी पर तुम 2 वर्ष देलो तमर एमएससी पाई 2 वर्ष देलो एमफिल पाई पुणी 3 वर्ष देलो तमर बीएड एमएड पाई तो 7 वर्ष वेस्ट कलो आ गोटे दिन जते तुम डिले करिवो कंपटीशन बड़ी बड़ी चालू छी तेणु जते तुम डिले करिवो तुम चाकरी पाइबार चांस तासे कमी कमी जिवो तेणु जहाँ को जदि करियर अछि रेलवे बैंकिंग जिबार अछि ग्रेजुएशन परे लाइन ता फिक्स करो लाइन धरो प्रिपेयर करो निश्चय सक्सेस पाइबो ओके सर कोटली रेवन फाइन यूनिवर्सिटी रो सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ କଲା ପରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ତା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଅନର୍ସ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର इंडिया सॉरी आउ थरे क्वेश्चन है जेतु मु एठी बसिची मोर क्लास रो माने रूम रे मो चेंबर रे लागिलेन ने मो से बारंडा रे बसिची तेन मते बस जाउची तो हाईवे कड रे नो सेटा हमर मु सुनी पालेंडी आउ थरे को सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अच्छा सेटा तो इंटरेस्ट अछि माने कोन जानियो कोन चाहू हां सर केते वर्ष प्रिपरेशन करला परे से अटेंड करबा दरकार केते वर्ष प्रिपेयर दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू पिला actually 1 year रे पाइछंती पिला अछंती 5-6 टा अटेम्प्ट करे पाइछंती ठीक अछि दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू ठीक अछि द फर्स्ट है कि SWOT एनालिसिस करियर अछि निजर स्ट्रेंथ वीकनेस फर्स्ट एनालाइज करियर अछि तापरी तमे से लाइन टा चूज करिवो जस्ट बिकॉज़ मो पडिसा घर लोको कि आउ के कहि देला से के प्लीज करिवोनी जदी बहुत इंटरेस्ट अछि एबिलिटी अछि स्ट्रेंथ जानि छ तम वीकनेस जानि छ ताली से लाइन रे जिवो कारण मो एक पे स्ट्रेस दी कहूची सक्सेस रेशियो आदरे बहुत कम लेस देन 1% चांस अछि कि आपण से क्रैक करि पारे एटा मु आपण को मन को डिमोटिवेट करिया कोनी एटा गोटे रियलिटी जिंसटा कहूची जदी सेटा करि परिबो इंटरेस्ट अछि एबिलिटी अछि ठीक अछि तो किछि वर्ष प्रिपरेशन करि कि तमे देखि परिबो ना साइड रे किछि अलगा भी जदी इंटर्नशिप की किछि पार्ट टाइम की जॉब करिया छ सेटा कले आउरी सेफ साइड रे किंतु पूरा 5-6 वर्ष प्रिपरेशन रे लगे देबो जति बाय चांस यदि हेलानी ताहाले बहुत असुविधा हो जाए जोटा कि बहुत सारा पिला को होउछि किंतु यदि पछरे केते वर्ष लागे तो 1 ईयर रे भी हे पारे 2 इयर्स रे भी हे पारे एवरेज देखा जाय छि कि 2 to 3 थर्ड अटेम्प्ट की फोर्थ अटेम्प्ट रे मोस्टली पिला माने क्रैक कर छ थैंक यू सर हां हेलो सर मो अभिजीत नायक आंचलिक डिग्री महाविद्यालय पदमपुर कॉलेज रो तृतीय वर्ष रो छात्र होटे इकोनॉमिक्स ऑनर्स सर मु बीएड करबा पे इंटरेस्ट अछि मोर सर क्वेश्चन बीएड यस सर हां 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 मो ज्योति प्रकाश सर मो क्वेश्चन रो आंसर दे परबे मो भाबुची
ठीक अछि सर प्लस 3 रे सर केते परसेंट मार्क रखले हमें बीडी ପାଇଁ एलिजिबिलिटी हे परिबो एलिजिबल बीडी ପାଇଁ ओके देखो तुम नाम कौन कहलो अभिजीत नायक सर अभिजीत यस अभिजीत सुनो देखो आजिका डेट रे बीएड करबा पई कोनोसी ग्रेजुएशन रो मार्क रो कोनोसी प्रतिबंधक नाही आगु थिला मार्क बेसिस रे हम ओडिसा रे जे ओडिसा कथा कहबा ओडिसा रे मार्क बेसिस रे बीएड सिलेक्शन होतला इवन मार्क बेसिस रे भी बीएड कला परे चाकरी रे भी सिलेक्शन होतला से प्राइमरी टीचर हो किबा सेकेंडरी स्कूल टीचर हो आजिका डेट रे मार्क बेसिस रे सेबिलिटी किछ नाही गोटे एंट्रेंस करूची एससीआरटी गोटे एंट्रेंस करूची आमर जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो भुवनेश्वर रे अछि से बीएड पाई की गोटे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करूची तमे से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देगी से एंट्रेंस क्लियर करले तुम बीएड सीट पाई परिबो तो बीएड कला पर भी तापर भी बीएड कला पर भी तुम जॉब पे अप्लाई करिवो सेतरी गोटे होची सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जोड़ा फर्स्ट टाइम हेजी एवं अपॉइंटमेंट 6000 अपॉइंटमेंट ऑलरेडी टीचर मानकर हे जाईची आ 11000 टीचर अपॉइंटमेंट एबे हबो जो सीपीटी बर्तन चाली तो सेही थरे मुडे देखिली गोटे जिंस हमर बहुत स्टूडेंट माने पाई जंती भलो स्टूडेंट माने जे मानकर भलो कैरियर से माने सीपीटी क्लियर करि पारनंती किंतु बहुत माने एवरेज स्टूडेंट जो माने क्लासरूम रे बिल्कुल साइ रहंती चुपचाप रहंती से पिला माने सब बर्तन सीपीटी क्लियर करके सब हाई स्कूल पोस्टिंग हे जंती तो गोटे भल जिनस मार्क कौन से डजंट मैटर मार्क दरकार नहीं तुम एबिलिटी तुम इंटरेस्ट केते तुम नॉलेज अच्छी से जिनस थिले तुम आराम से सक्सेस पाइबो ओके यस सर थैंक यू सर हेलो सर आउटे क्वेश्चन देखु जस्ट 1 मिनिट जो सीमा गुच्छायत एवं बहुत पिला मानकर गोटे क्वेश्चन अछि सर प्लीज डिस्कस द बीपीटी रो फ्यूचर कोन बीपीटी कहले कोन स्कोप सेटा पचारि जो मैक्सिमम पिला माने मु चार्ट बॉक्स देखुची बीपीटी माने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन जोटा कि तुम मैंने जानिथिबो आजिका डेट रे हम स्पेशल ओडिसा कथा कहबा तार बहुत स्कोप अछि जोटा कि प्रत्येक स्कूल रे गोटे रिक्वायरमेंट अछि पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर टू बिकम ए फिजिकल एजुकेशन टीचर यू हैव टू कंप्लीट योर बीपीएड या डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन इन बैचलर इन और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन प्रत्येक स्कूल रे गोटे टीचर मान को अपॉइंटमेंट करा होजी एज ए पीटी तो बीपीटी भल स्कोप अच्छी जदि आम ओडिशा कथा कहबा ओडिशा रे हमर सबुठु पुरातन जो कॉलेज अच्छी बीपीटी जो फिजिकल एजुकेशन पाई जोड़ा बालियापाल रे अच्छी बालियापाल बहुत फेमस कॉलेज जोड़ा हम यूनिवर्सिटी रो एफिलिएटेड कॉलेज तो सेठी तुम करि पारिबो ता सहित ओडिशा बाहर गले बहुत जगह रे इवन वेस्ट बेंगल नेबर स्टेट रे वेस्ट बेंगल रायपुर आंध्र प्रदेश बहुत जगह रे कोर्स भी होउची ता सहित सबुठु भल कथा जदि भल इन्स्टिट्यूट कहबी जदि ओडिशा बाहर गोटे अछि तमरो ग्वालियर रे गोटे भल इन्स्टिट्यूट अछि तमरो जो बीपीएड डीपीएड पाई प्राइवेट सेट तुम करि पारिबो ओके हमरो बहुत प्रश्न भी नेलुनी मु पिला मन अनुरोध करबी जब से मानकर आप कुछ क्वेरी थाए से माने मोर रिसोर्स पर्सन मानकर कांटेक्ट नंबर नेकी तांक से कांटेक्ट करि पानिबे ता नहले आम मान पाखो भी जदि क्वेश्चन पठेबे तने आमे सेटा को तांक से मान को पूरा आंसर करके आपन मन पकरे पहुंची पाई धन्यवाद गायत्री मैडम आपण दया करके चैट बॉक्स रे हमरो मेल आईडी ता दे दियंतु एवं कांटेक्ट नंबर ता चैट बॉक्स रे दे दियंतु पिला माने से मेल आईडी एवं कांटेक्ट नंबर नेबे वर्तमान आमे जेहेतु समय आमे अतिक्रांत करछे एठी ए कार्यक्रम को आमे एठी शेष करबा ता पूर्व मु अनुरोध करबी हमरो से रघुनाथ मंडल को से अनुष्ठानिक धन्यवाद जणेबे हमरो अतिथि मान धन्यवाद सर आज आमे अत्यंत आनंदित आज जो तृतीय कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम वेबिनार माध्यम रे सक्सेसफुल हेची आमे बहु प्रतीक्षित बहुत दिन अपेक्षा करथिलु एवं प्रिंसिपल एवं डिफरेंट कॉलेज को इनफॉरमेशन देइथिलु जा हो बहु मात्रा रे आज आम गहन छात्र छात्री एवं सार माने भी उपस्थित अच्छा विभिन्न जिल्ला किंतु सर्वोपरि आज आम गहन रे विशेष कर जो रिसोर्स पर्सन सर्वप्रथम डॉक्टर ज्योति शंकर प्रधान एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग सेल फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर से हमको बहुत भल भाव आज शिक्षा विभाग रे किंती जने शिक्षक माने यूजी टू पीजी पर्यंत किंती जने एजुकेशन रे कैरियर करि पारिबो से विषय विस्तृत आलोचना करछंती आउ मु तांको अशेष धन्यवाद देबी कारण हमर अनुरोध रक्षा करी सार
डॉक्टर ज्योति शंकर प्रधान सर आम गहन रही अति सुंदर भाव आमको माने कैरियर संबंध रे से शिक्षा प्रदान करिसेंती पिला मानकु कहिसेंती प्रश्न उत्तर रे माध्यम रे सेति आमर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज तरफ अंतर गभीर अंतर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आपको धन्यवाद सर नमस्कार ता सत्वे आम गणर अन्यतम अतिथि भाव श्री रूप कुमार प्रधान कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट सार मु शुणुली जे जेकोसी आम कैरियर करवा से आमर डोमेन नॉलेज रहा दरकार ए विषय से हाइलाइट करुले वास्तविक आम समस्ते स्कोप इज वेरी माने देयर इज अनलिमिटेड स्कोप अच्छी जो थी कि आम निजर कैरियर आम एस्टाब्लिश करि परिबा किंतु सबुठु इम्पोर्टेंट है आम से डोमेन नॉलेज आम रहा दरकार ए विषय भी सार आम विस्तृत भाव आउ जो वेबिनार माध्यम समस्त पार्टिसिपेंट को से सूचयचंती सेतिपई इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज तरफ मु सर आपन को धन्यवाद ज्ञापन करूची रूप कुमार प्रधान सर धन्यवाद सर आम सहित अन्यतम अतिथि भाव श्री अरविंद दास सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर is not only certified career counselor but also he is motivational speaker sir गोटे क्वेश्चन थिला मैडम आपण या परे धन्यवाद ज्ञापन करूची रघुनाथ को कंटिन्यू करंतु जा प्रश्न अछि चैट बॉक्स रे आपण देबे तापर हमें परवर्ती समय आपण को रिप्लाई हमें देबो तो हमर जो अरविंद दास सर बहुत भलो भाबरे डिफरेंट आईटी सेक्टर रे हो फ्रीलांसिंग सेक्टर रे हो कि बिजनेस सेक्टर हो एससीपी सेक्टर हो विभिन्न सेक्टर विषय सार विस्तृत आलोचना करिसेंती एवं सबटु बड़ कथा हैला जे से जो कथा कहले आईएएस कथा कहले इंटरेस्ट एबिलिटी एंड स्कोप एटा हो सबटु बड़ कथा जे आम भितरे कोन हमर जोटा कि आमे करि पारिबा हमर जोटी एबिलिटी अछि एवं मार्केट रे जार डिमांड अछि से बली कोर्स जदि आमे करिबा ताले डेफिनेटली आमे करियर को आमे ठीक भाबरे माने एस्टाब्लिश करि पारिबा बाकी आम करियर को आमे चूज करिबा जहा पर कि आमे भविष्य रे आमे चाकरी पाइबा बा आमे गोटे ठीक वृत्ति नै कि आमे निजे स्वावलंबी हे पारिबा ए विषय रे बहुत कथा अरविंद सर कहिसंती आउ समय स्वल्पता हेतु आमर सबु वक्ता खूब कम समय भितर से तांकर वक्तव्य रखिसंती आउ सेति पई आज मु पुनी थरे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज तरफ अरविंद सर को श्री अरविंद दास सर को मु आमर धन्यवाद ज्ञापन करूची जे सर आपण अति मूल्यवान वक्तव्य आमर कैरियर काउंसलिंग संबंध रे रखिथिबारु आपनको पुनी थरे धन्यवाद आमर जी अछंती आमर अनुष्ठान रो जे प्रतिष्ठाता इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज रो प्रोफेसर उपेंद्र पाढ़ी सर तांकर प्रबल उद्यम एवं प्रगाढ़ इच्छा शक्ति जे समग्र ओडिसा रे कैरियर विषय रे पिला माने जिमती अवगत हेबे एवं soon after the graduation से माने किमती निजर गोटे राइट कैरियर बाछि पारिबे सेति पई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज रु आमे माने जो माने एक्सपर्ट तांकु से डाकी ए जो प्रोग्राम को से कोऑर्डिनेट करथिबारु मु तांकु विशेष धन्यवाद ज्ञापन करूची एवं ता सहित हमर जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गायत्री पटनायक मैडम से मध्य ए जो प्रोग्राम को मॉडरेट करथिबारु मु तांको धन्यवाद दोची एवं तत्परे हमर मनोरंजन पंडा सर जे ए समग्र प्रोग्राम से कोऑर्डिनेट करूचंती मनोरंजन पंडा सर तांको मध्य मु विशेष धन्यवाद ज्ञापन करूची ता सहित सुचिता मैडम एवं भाग्यलक्ष्मी बेहुरा एभली अनेक जो माने हमर अनुष्ठान रो अछंती समग्र बहुमूल्य समय दे से माने हमको सपोर्ट करथबा प्रोग्राम टी साफल्य मिलित हेछि किंतु सर्वोपरि जो छात्र छात्री माने विभिन्न जिला रु आज हमर अनुरोध रक्षा करिकि ए जो वेबिनार रे कैरियर काउंसिल वेबिनार उपस्थित अछंती आपण समस्त को मु धन्यवाद दोछि एवं आगामी दिन रे हमें आपण मानक सहित जोड़ी कि रहिबु आपनकर जहां भी प्रश्न अछि ईमेल हमें देबु एवं ए जो कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम जो हेछि एटा रिकॉर्डिंग भी करा जाय छै आपण को जे रिकॉर्डिंग टा को आपण को पठेई दे पारिबु हमें जहां किछि जदि प्रश्न भी थाए ताले आपण हमको प्रश्न पठेइबे एवं आमे यथासाध्य चेष्टा करिबु आपनको प्रश्न उत्तर देबा पई कारण हमर संपर्क एक लॉन्ग टर्म संपर्क आमे स्थापन करिया पई चाहूछु समग्र ओडिसा रे ए कार्यक्रम आमे व्यापक भाव रे करिया पई आमे आगु को बढ़िचु त आपण मानकर साहाय्य आपण मानकर सहानुभूति आम प्रत्येक को समस्त को दरकार सर्वशेष रे पुणी थरे हमर
जो रिसर्च पर्सन जो माने थिले ज्योति सर एवं रूप कुमार प्रधान सर अरविंद दास सर को पुनी थरे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज रु धन्यवाद ज्ञापन करूची एवं उपस्थित समस्त पार्टिसिपेंट एवं रिसर्च पर्सन एवं अदर सर मैडम प्रिंसिपल जदि प्रिंसिपल सार्स एवं अदर फैकल्टी मेंबर्स जो माने स्थान रे उपस्थित अछंती समस्त को धन्यवाद दे आज रो ई वेबिनार को हमें समापन करूछु बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर धन्यवाद